बैंकिंग कसूर तथा सजाए इन 2064 और बैंकिंग ऑफेंस एंड पनिशमेंट एक्ट 2064 परिच्छेद 02 और चैप्टर 2 बैंकिंग ऑफेंसेस। खाता न खोलने व नगद भुगतानी अनाधिकृत रूप में मांग न करने। Not to open an account or demand cash payment in an unauthorized manner. अनाधिकृत रूप में चेक बुक व बैंक विवरण प्राप्त व जारी न करने। Not to obtain or issue checks, checkbooks or bank statements in an unauthorized manner. अनाधिकृत रूप में रकम निकालन व भुगतानी न करने। Not to make unauthorized withdrawals or payments. विद्युतीय साधनों को दुरुपयोग व अनाधिकृत प्रयोग करी भुगतानी न करने। Not to obtain or make payment by way of abuse or unauthorized use of electronic means. अनाधिकृत रूप में ऋण उपलब्ध न कराने व न लेने। Not to avail or provide loans in an unauthorized manner. ऋण को दुरुपयोग न करने। Not to misuse credit. बैंकिंग स्रोत, साधन र संपत्ति को दुरुपयोग न करने। Not to misuse banking resources, means and assets. बाकी देय को भुगतानी नगरी संपत्ति आर्जन न करने व खाता न खोलने। Not to acquire assets or open account by borrower who has overdues. ऋणी को नुकसान होने गरी क्रेडिट सुविधा रोक न पाने। Not to stop credit facility in the way to loss working project of borrower. खातामा परिवर्तन व जालसाजी गरेर नुकसान न कराउने। Not to make loss by making alteration in the account or ledger or by committing forgery or fraud. अत्यधिक, न्यून व गलत मूल्यांकन न करने। Not to derive excess, low or false valuation. 14. अनियमित आर्थिक व वित्तीय कारोबार न करने। Not to carry out and cause to carry out irregular economic or financial transactions. Banking Offence and Punishment Act, 2064. बैंकिंग कसूर तथा सजाए ऐन 2064 परिच्छेद 02 और चैप्टर 2 बैंकिंग ऑफेंसेस। Not to open an account or demand cash payment in an unauthorized manner. कसैले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा नगद भुक्तानी माग गर्दा निम्न कार्यहरू गर्नु हुँदैन। क गलत कागजातहरू पेश गरेर खाता खोल्ने वा जानी खाता खोल्न अनुमति दिने। ख कानूनले स्वीकृत गरेको बाहेक काल्पनिक व्यक्ति वा अन्य व्यक्ति को नाममा खाता खोल्ने वा खाता खोल्न अनुमति दिने। ग चेक काटेर यस्तो खाता मार्फत भुक्तानी माग्ने जसमा चेकको रकम बराबर पर्याप्त रकम नभएको थाहा हुँदाहुँदै पनि भुक्तानी गर्ने। Not to obtain or issue checks, checkbooks or bank statements in an unauthorized manner. एक कसैले पनि कुनै व्यक्तिको चेकबुक वा खाता विवरण अनाधिकृत रूपमा वा कुनै पनि किसिमले झुक्याएर वा आफू सोही व्यक्ति भएको भनी गलत प्रभाव दिएर प्राप्त गर्न वा माग गर्न मिल्दैन। 2 कसैले पनि अनाधिकृत रूपमा कुनै व्यक्तिको लिखित अनुरोध बिना चेकबुक वा खाता विवरण अरू व्यक्तिलाई वा संस्थालाई उपलब्ध गराउन मिल्दैन। 5 अनाधिकृत रूपमा रकम निकालन वा भुक्तानी न गर्ने not to make unauthorized withdrawals or payments. कसैले बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट रकम निकाल्दा वा भुक्तानी गर्दा निम्न कार्यहरू गर्नु हुँदैन। क अरू व्यक्तिको खाताबाट अनाधिकृत रूपमा रकम निकाल्ने। ख अरू व्यक्तिको चेक चोरी गरेर वा अन्य कुनै तरिकाबाट प्राप्त गरेर रकम निकाल्ने। ग ग्राहकको खाताबाट अनाधिकृत रूपमा रकम सार्ने वा अनाधिकृत भुक्तानी गर्ने। घ कुनै झुट्टा वा अरू व्यक्तिको बिल, चेक, ड्राफ्ट वा यस्तै अन्य साधन मार्फत नगद भुक्तानी प्राप्त गर्ने वा अनाधिकृत रूपमा नगद भुक्तानी गर्ने। Not to obtain or make payment by way of 7 अनाधिकृत रूपमा ऋण उपलब्ध न कराउने वा न लिने not to avail or provide loans in an unauthorized manner. कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गर्दा वा लिँदा निम्न कार्यहरू गर्नु हुँदैन। क झुट्टा,
नक्कली व अवास्तविक वित्तीय विवरण पेश गरेर व कृत्रिम व्यापार सिर्जना गरेर ऋण उपलब्ध कराउने वालीने। ख धरोटी को अनियमित रूप में बढ़ी मूल्यांकन गरेर ऋण उपलब्ध कराउने वालीने। ग झुट्टा विवरण का आधार में परियोजना लागत अनियमित रूप में बढ़ाए ऋण उपलब्ध कराउने वालीने। घ प्राप्त करे को अधिकार व स्वीकृत सीमा भंदा बढ़ी ऋण उपलब्ध कराउने वालीने। न कुनै बैंक व वित्तीय संस्था बाट ऋण लिंदा एक पटक प्रदान गरिस्के को धरोटी को मुक्त नगरी पुनः ऋण लिने व अन्य बैंक व वित्तीय संस्था बाट सोही धरोटी को विरुद्ध में निर्धारित भंदा बढ़ी ऋण लिने वा देने। तर कंसोर्टियम अंतर्गत प्रदान गरिने ऋणमा यो प्रतिबंध लागू हुने छे। च वास्तविक रूप में व्यापार संचालन गर्न असमर्थ व्यक्ति को नाम में स्थापना भय को संस्था बाट ऋण लेने वा उपलब्ध कराउने। छ ग्राहक को व्यापारिक कारोबार को तुलना में आवश्यकता भंदा बढ़ी ऋण उपलब्ध कराउने। ज ऋण सुविधा उपलब्ध कराउंदा कुनै किसिम को अनावश्यक फायदा स्वीकारने वा उपलब्ध कराउने। 8 ऋण को दुरुपयोग न करने, नॉट टू मिसयूज क्रेडिट। कसैले पनि बैंक व वित्तीय संस्था बाट उपलब्ध भय को ऋण सुविधा दुरुपयोग गर्न वा अरुलाई दुरुपयोग गर्न न दिने। 9 बैंकिंग स्रोत, साधन र संपत्ति को दुरुपयोग न करने, नॉट टू मिसयूज बैंकिंग रिसोर्सेस, मीन्स एंड एसेट्स। 1 कुनै प्रवर्तक, निर्देशक, शेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कर्मचारी, सलाहकार, प्रबंध एजेंट व संबंधित व्यक्ति व संस्थाले बैंक व वित्तीय संस्था को स्रोत को दुरुपयोग कर न पाउने। तर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत व कर्मचारीहरूले प्रचलित कानून अनुसार कर्मचारी सुविधा योजना अंतर्गत ऋण लिनु अवरोध मानिने छे। 2 कुनै पनि व्यक्तिले बैंक व वित्तीय संस्था को संपत्ति दुरुपयोग गरी निक्षेपकर्ताहरूको हानि हुने गरी कार्य गर्नु हुँदैन। 3 बैंक व वित्तीय Not to acquire assets or open account by borrower who has overdues. कुनै पनि बाँकी देय ऋणीले बैंक व वित्तीय संस्थामा देय रकम भुगतान नगरी स्थानीय व विदेशी बैंक व वित्तीय संस्थामा खाता खोली पैसा जम्मा गर्न, सो खाता निरंतर संचालन गर्न, कुनै चल व अचल संपत्ति खरीद गर्न, उक्त संपत्ति को स्वामित्व आर्जन गर्न व कब्जा लिन पाउने छे। यदि कुनै ऋणीले बाँकी देय हुनु अघि कुनै चल अचल संपत्ति आर्जन गरेको छ वा खाता संचालन गरिरहेको छ भने, सो संपत्ति वा खाता मार्फत प्राप्त हुने रकम बाँकी देय भुगतानमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। Not to stop credit facility in the way to lost working project of borrower. ऋणी को परियोजना का लागी एक पटक क्रेडिट सुविधा स्वीकृत गरी पहिलो किस्ता प्रदान करे को बैंक व वित्तीय संस्थाले पर्याप्त आधार र ठोस कारण बिना बाकी किस्ता रोकन पाउने छें। Not to make loss by making alteration in the account or ledger or by committing forgery or fraud. कसैले पनि आफ्नो फाइदाका लागि वा अन्य व्यक्तिलाई नोक्सान वा फाइदा पुर्याउन बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै दस्तावेज, खाता वा लेजरमा लेखिएको सामग्रीलाई हटाउने वा पुनःलेख गरेर फरक अर्थ दिने गरी जालसाजी गर्न पाउने छें। साथै कसैले पनि गलत सूचना वा असत्य घटनालाई सत्य रहेको जस्तो देखाएर झुट्टा कागजातमा हस्ताक्षर गराएर जालसाजी गर्न पाउने छें। 13 अत्यधिक, न्यून वा गलत मूल्यांकन न करने, नॉट टू डिराइव एक्सेस, लो और फॉल्स वैल्यूएशन। बैंक व वित्तीय संस्थाले ऋण को धरोटी को रूप में राखे को चल अचल संपत्ति व गैर बैंकिंग चल अचल संपत्ति को मूल्यांकन गर्दा अत्यधिक,
न्यून वा गलत मूल्यांकन गरी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई नुकसान पुर्याउन नपाइनेछ। Not to carry out and cause to carry out irregular economic or financial transactions. कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थालाई नोक्सान पुर्याउने उद्देश्यले कुनै काम गर्न वा नगराउन, लेनदेनमा अवरोध पुर्याउन, निःशुल्क सामान वा सेवा लिन वा दिन, चन्दा, अनुदान, उपहार वा दान लिन वा दिन, गलत दस्तावेज तैयार पार्न वा गलत फायदा लिन कुनै प्रकारको अनियमित कारोबार गर्न वा गराउन नपाइनेछ।